Thank you for starting the recording. Um, so, in the last lecture, we have started with the networking devices, and regarding that networking devices, we have seen that we have different networking devices which are used at different places also. Let us see. We have gone through different networking devices like repeater, hub, switch, bridge, router, gateway, modem. These are the possible networking devices which were used. Some of them were used, and now they are not being used. Like bridge है और gateway है. Bridge तो नहीं है. बाकी other devices are still used. Repeaters use होता है. Then hub, switches, other devices are still there which are used till now. Um, Repeater for the extension purpose, okay, which boost up the signal and retransmit it on the higher level, or we can say at the higher power onto other side. It takes signal from one side and it transmits the signal to another side, so that your signal can cover longer distances also. Okay, so for that purpose the repeater is used. Okay, then hub, basically it is a term device. We used to say the statement first was this is the device which takes the signal, which receives the signal and broadcast it to all the ports, okay, which are available. Okay, so it is the device which receives the signal and which broadcasts the signal to all the port or all the terminals or all the computers which are connected to that particular device. So it is also called as multi-port repeater. So it is repeating the signal on multiple ports. So that's why it is also called as multi-port repeater. It works on the physical layer. Then switch is an intelligent device which receives the signal. On receiving a signal, it first check the signal where it has to go. Okay, it does not uh, it does not broadcast the signal because that broadcasting of signal is not a good idea. It just check for the signal where it wants to go, and transmit the signal to that particular destination port only. And some noise is coming. Sorry, I'm not shared my screen. I was taking lectures on this slide, and I thought that you guys are looking. So now I'm presenting. But the sound is coming. All are muted. Still, hub can be used as a repeater. Hub can be used as a repeater. Yes, hub का हमने क्या बताया अभी आपको? It's a multi-port repeater. So दोनों में खाली यही फर्क है. The difference between your hub and your repeater is that your repeater is having only two ports, that is incoming and outgoing port. And hub is nothing but the hub is a device which acts as a multi-port repeater. It repeats the signal. It broadcasts the signal to multiple ports, to all the devices. Sorry, to all the terminals which are connected to that particular port. So it is a form of multi-port repeater because hub is having multiple ports. Okay, as you can see, this is the diagram. You will find 8 port, 16 port. Okay, so 24 port तक हो सकता है. So it is possible. Then ब्रिज हम लोग ने देखा. स्विच के बाद में हम लोग ने ब्रिज देखा था. So network bridge connects multiple network segments. For connecting to network or to network segment, the bridge were used earlier. और फिर उसके बाद में कुछ और भी था. राउटर के बारे में हम लोगों ने देखा. राउटर हमारा which routes between the network. Okay, basically it routes the packet from one network to another network. Okay, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आती है. It also manage or it also maintain a routing table actually. So that routing table actually helps the router to
route the signal or packet to the particular destination. So it takes the help of the routing table. So it manages a lot of things. Then gateway. So gateway is a device which again which is used to connect to network segment or to transfer the signal or to transfer a packet from one network to another network. But it also maintain or it also does few function like प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर इम्पेडेंस मैचिंग डिवाइसेस मतलब थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए हो सकता है कि ये इसकी लैंग्वेज अलग हो इसकी लैंग्वेज अलग हो दोनों को सिंक करने के लिए दोनों को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए गेटवे का यूज़ कर सकते हैं so it was a device which acted as a translator between the two network segmented to different areas then last one model okay actually I'm not feeling well but still I'm here so थोड़ा बहुत एक्सक्यूज मी एक्सेप्ट करो सर, यस यस बोलो बोलो आपने आपका ईयरफोन लैपटॉप को कनेक्ट किया है या फ़ोन को कनेक्ट किया है? नहीं मैंने अपना ईयरफोन लैपटॉप पे ही कनेक्ट किया हूँ नॉट तो गेटिंग माई आप वॉइस एक बार आप फ़ोन पे कनेक्ट करके देखो ना, क्योंकि आवाज़ आ रही है, बट साथ में वो बैकग्राउंड वॉइस है। तो एक बार आप फ़ोन से कनेक्ट करके चेक करिए ना। ओके लेट मी चेक ओके नाउ इट इज ऑडिबल हाँ सर, आपकी वॉइस ऑडिबल है, बट बैकग्राउंड में वो नॉइस आ रहा है एकदम। अच्छा अभी भी वॉइस आ रही है हाँ सर। हम्म, पहले भी आ रही थी ना वॉइस वो बीच में लेकिन अचानक बंद हो गई थी हाँ, वो बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइस कैंसलेशन आपके ईयरफोन का थोड़ा। अच्छा ऐसी बात है क्या अच्छा अभी कैसी है अभी कैसी आवाज़ आ रही है हाँ सर, अभी बराबर है। अभी ठीक है मतलब मैं अगर विदाउट अगर ईयरफोन में यूज़ करता हूँ तो ओके आवाज़ आ रही है यस सलवा हाउ इट इज़ नाउ जी सर, इट्स गुड। इज इट ओके रियली यस सर, वी आर ऑडिबल प्रॉपर्ली, वी कैन हियर इट। Okay, thank you, Selva. So I'm not going to use this earphone no, right now. So okay, so going back to the अपना device, the last device was modem, that is modulator and demodulator, and we have seen that for using we are having a telephone line. So in order to use the internet connection from those telephone line, we used to have modem so that it will convert your analog signal into the digital signal and then your digital signal to analog signal. Okay, so it was just a quick revision regarding the networking devices. Okay, let us move ahead because we don't have much time already we have invested around 10 minutes okay so starting with the next topic that is OSI reference model okay this is OSI reference model is basically an open system interconnection reference model it's a networking framework to implement multiple protocols around 7 layers okay it has been given by the ISO that is ISO is nothing but we used to pronounce it as a International Standard Organization ISO. Okay, but the actual pronunciation, the actual word is like International Organization for Standardization, basically. Okay, so this is the OSI reference model. It's a networking framework or it's a reference model, networking reference model, networking framework which has been given by the ISO, that is International Organization for Standardization. Okay, so this OSI model does not perform any function. Okay, as you will see in the networking process, but this is the conceptual framework. Okay, so that we can understand we can understand the working of or we can say the IP packet delivery from the source computer to the destination okay so from source to the destination how your IP packet is traveling so it will give you a conceptual framework okay so that we can better understand the complex interaction that are happening from source to the destination basically okay so in short, the very short introduction about this OSI reference model, Open System Interconnection Reference Model, and this has been given by the ISO, that is International Organization for Standardization. Okay, and this is a networking framework reference model
it does not perform lot of function, okay, just to implement lot of protocols in your networking. And it is a conceptual framework so that you can better understand the complex interaction, okay, how you have a source computer, you have a destination computer. So how your packet is traveling from your source computer to the destination computer. So these multiple interactions are there. So how it is being done, so it lets you complete give you complete introduction and the working and the functionalities of this multiple layers when you send a simple packet from the source to the destination, okay. So this is the reference model just to understand the complexities behind the traveling, okay. Let us move to the actual reference model. As you can see, this is device A and device B, okay. You have a device A, I call it as a source computer, and your device B as a destination computer, okay. And we have these 7 layers, as you can see. And in order to remember these layers, this is very easy, okay. Most of you know, and you have remember also, okay. But the very simple way or simple method to understand the to remember these layers is, please do not throw sausage pizza away, okay. You have to read it from the bottom, okay. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer, okay. So you need to remember, and you need to read it from the bottom to top, okay. So that, because उसका पूरा मतलब वही वहीं से रीड करते हैं. अगर कोई भी आपको पूछेगा कि the very first layer of the OSI reference model, so you need to say that the first reference model layer is physical layer, okay. So you have to read from the bottom. Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer, okay. Please do not throw sausage pizza away, okay. So please do not throw sausage pizza away. So this is a statement you need to remember so that you can read all these layers very easily, okay. So now just try to understand how this is working basically. So this is the main diagram, or this is a very common diagram. Whenever you will get a question of OSI reference model, then you need to draw this diagram, okay. This is the very common diagram, and you will find this diagram everywhere also, okay. So these diagram you need to draw in exam, अगर exam में question अगर आपको आता है तो, okay. So just remember, okay, whatever concentration I'm telling you, you need to remember it, okay. Now you look at the screen. So this is my device A, which is the source computer, okay, and this is the device B, which is the destination computer, okay. So you are sitting at your home, okay. You are sitting at your home and you want to send one email, okay, to your friend. So you have sent an email to your friend, okay. So that email will not go as it is, okay. That email has to be traveled in some form, okay. So वो किस फॉर्म में जाएगा, दैट इज द कंप्यूटर का लुकआउट, ओके. उसका उसका डिवाइड होगा, उसके पैकेट बनेंगे, उसकी फ्रेमिंग होंगी, एरर चेकिंग होंगी, एंड ऑल दैट. लॉट ऑफ functions are there which are being performed by these layers, okay. We'll see one by one. So your email which you are going to write, okay. So that email will be written with the help of any application, maybe your browser, okay. So you have a Mozilla Firefox browser, or you have any Google Chrome, Safari, anything, okay. So you have written one email, okay, with the help of any application, and with the help of application layer protocol you will send it, okay. ईमेल को हैंडल करने के लिए हमारे पास में एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल, पॉप है, पॉप 3 है, ओके. आईसीएमपी नहीं है, अच्छा नाम था, मैं उसका नाम भूल गया. एनीवन नोज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल व्हिच हैंडल द ईमेल्स? SMTP, okay. So SMTP is a simple mail transfer protocol. SMTP, I just forgot the name. So simple mail transfer protocol is the one which works at the application layer and which handle all your mails, okay. जो मेल आएगा मैनेज करेगा, आपको बताएगा, आपके मेल को हैंडल करेगा, आगे भेजेगा, एंड ऑल दैट इट वर्क्स टू, ठीक है. तो सबसे पहले योर मेल विल गोज टू द एप्लीकेशन लेयर, ओके. एप्लीकेशन लेयर पे काम हुआ, एप्लीकेशन लेयर वाले ने अपना काम किया. इट विल फॉरवर्ड योर ईमेल to the
नेक्स्ट लेयर, ओके, दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। तो ये आपका मेल जो कि एप्लीकेशन लेयर पे आपने यहाँ पर काम किया, ओके। सो यू हैव रिटन योर ईमेल एंड यू हैव फॉरवर्डेड इट टू द एप्लीकेशन लेयर, ओके। एप्लीकेशन लेयर में आपने फॉरवर्ड नहीं किया, आपने एप्लीकेशन में जब लिखा तो वो खुद ब खुद एप्लीकेशन लेयर के पास में आ गया, ओके। सो एप्लीकेशन लेयर will perform some task, okay, some function it will perform, okay। each and every layer, remember, each and every layer is responsible for some task, okay। each and every layer is responsible for some task, okay। so application layer will do the task of its जो भी इसका task है, it will perform those tasks and then it will forward the email in the form of packet और कुछ भी जो भी है उसने भेजा नीचे, ओके। अब ये मिला किसको, प्रेजेंटेशन लेयर को मिला, ओके। आफ्टर रिसीविंग, so it means that at the sender side, your presentation layer will receive the data or will receive a packet from the application layer. Okay, so application layer se data mila. Now presentation layer hai. So see this presentation layer. So this presentation layer will receive the data from application layer. It will perform the task whatever it wants to do, and then it will forward the data to the next layer, that is session layer. Okay. Your session layer is also having some task for maintaining the session, for establishing the session, for maintaining and for terminating. Okay. So regarding the session management, all these tasks are being done by the session layer. So session layer will manage the things. Session layer will do the task, and it will forward the data to the next level, that is transport layer. अब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। सो हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड, ओके। कैसे, कौन सा ट्रक बुक करेंगे, ट्रॉलर बुक करेंगे, लॉरी बुक करेंगे, 407 बुक करेंगे, ऑटो से जाएंगे। सो हाउ द ट्रांसपोर्टेशन गोइंग टू बी, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द डिफरेंट protocols, okay। we have different algorithm which will learn up in the transport layer, okay। अब ट्रांसपोर्टेशन के पास में आता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, उसको वापस अपने नीचे भेजेगा। नेटवर्क लेयर यहाँ पर काम करेगा, फ्रेमिंग का काम करेगा, यहाँ पर उसको एड्रेस वगैरह लगेगा। तो नेटवर्क लेयर कुछ यहाँ पर आपके लॉजिकल एड्रेसेस वगैरह लगेंगे। तो लॉजिकल एड्रेसेस वगैरह लगने के बाद में वो उसको नीचे भेजेगा। नीचे जाने के बाद में वो आएगा डेटा लिंक लेयर के पास में। व्हेन डेटा लिंक लेयर विल रिसीव द पैकेट और विल रिसीव द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, इट विल उसके अंदर कुछ और एड्रेस डालेंगे, जैसे कि मैक एड्रेसेस वगैरह वो उसमें ऐड करेगा। After adding the MAC address, it will forward to the physical layer. अब physical layer पे आने के बाद में physical layer, it's a very down to earth layer, we can say. Now this layer is responsible for sending the data into the raw bits, okay। अब वो आपका जो data है उसको वो raw bits में convert करेगा, ठीक है। And those raw bits will be transferred via any transmission media, okay। Whatever transmission media you are using, okay। If you are sitting at your home and you are using a Wi-Fi communication or Wi-Fi connection, अगर आप Wi-Fi connection use करें, so it means your media is the wireless media. If you are using at the desktop at your home, if you are using a desktop at your home and the LAN wire is connected to your desktop, it means that you are using wired media, okay। So the transmission media can be anything. Now your data will travel, okay, so from source to the destination. Now try to understand, मैं पूरा आपको जर्नी बता रहा हूँ so that आपको ये रेफरेंस मॉडल समझ में आए, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में इसका आता है, ओके। From source, okay, that is from the physical layer, okay। Now your data is being converted into the raw bits and it is being transferred to the destination computer, okay। अब destination computer आपका जहाँ पर भी है, for example आप अपने friend को email कर रहे थे and you are sitting at your home location, that is in the Mumbai, and you are sending a mail to your friend who is sitting in the Thane, okay। तो अब आपके उस particular data को, उस mail को travel करना है from Mumbai to Thane, okay। यू कैन इमेजिन कहाँ से जाना है, कैसे जाना है और कैसे उसको जाना है। सो वो सारे काम आपका रेफरेंस मॉडल देखेंगे, आगे देखते हैं। अभी आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है, ओके। डेटा ट्रैवल किया करने के बाद में पहुंच गया थाने, ओके। थाने के किसी नेटवर्क से होते होते आपके घर के किसी नेटवर्किंग डिवाइस तक पहुंचा, ओके। उसको एड्रेस मिला यहाँ का, अब वो एड्रेस लेके आया। नाउ योर नेटवर्किंग डिवाइस जो आप मतलब आपका जो फ्रेंड जिससे कनेक्टेड है, ओके, या द नेटवर्किंग डिवाइस फ्रॉम विच योर फ्रेंड इज कनेक्टेड,
So that networking device will forward your data to that particular computer on which your friend is sitting. Okay, तो आपके फ्रेंड के पास में आ गया. अब आने के बाद में अगेन आपका कंप्यूटर यानी आपके आपके फ्रेंड का कंप्यूटर. ओके, this is device B. I'm talking about this now, this right part. Okay, right side part. Your system will receive a packet. Okay, packet ने आपके सिस्टम ने उस पैकेट को रिसीव किया. ओके, कहाँ रिसीव करेगा? इट विल बी रिसीव बाय द फिजिकल लेयर. अगेन, अब जितना प्रोसीजर आपका सोर्स साइड में टॉप टू बॉटम हुआ है, वही सारा प्रोसीजर यहाँ पर आपका यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो रिवर्स में होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर डेटा विल बी रिसीव्ड बाय द फिजिकल लेयर. ओके, so at the destination side or at the receiver side, your data will be received by the physical layer. आपके सिस्टम ने इसको कैप्चर किया और फिजिकल लेयर को दिया. आपके फिजिकल लेयर का काम ये है तो जो रॉ बिट्स आए हैं उनको वापस से ज्वाइन करेगा. ओके, सारों को प्रॉपरली कलेक्ट करेगा. ओके, बिकॉज सब उड़ते उड़ते आए हैं. ओके, सब अकेले अकेले आए हैं. बिकॉज जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर एक MP3 फाइल भेजी होती, if you would have sent one MP3 file of 5 MB from the source to the destination, it doesn't mean that your 5 MB will come as it is. Okay, your 5 MB will be divided into, maybe हो सकता है कि उसके 5, 10, 15, 20, 25 डिवाइडेशंस के पार्ट. ओके, तो आपके फिजिकल लेयर का काम ये है कि सब सारे पैकेट्स को एक जगह कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके ऊपर उठा के फॉरवर्ड करेगा. ओके, योर डेटा लिंक लेयर विल रिसीव द पैकेट, विल रिसीव द डेटा और उसको फिर वो प्रोसेस करेगा. अब जो डेटा लिंक लेयर का जो काम है वो करेगा. ठीक है, वो करने के बाद में उसको ऊपर अपने ऊपर वाले लेयर को देगा, दैट इज द नेटवर्क लेयर. द नेटवर्क लेयर एट द रिसीवर साइड, योर नेटवर्क लेयर विल रिसीव द पैकेट फ्रॉम द बॉटम लेयर, दैट इज फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर, and it will forward, it will do some task and it will forward to the next layer, that is to the transport layer. अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद में वो फिर आगे फॉरवर्ड किया सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन है यानी आपका जो फ्रेंड जो फायरफॉक्स में या फिर आपका फ्रेंड जो गूगल क्रोम पे उसने ब्राउज़र ओपन करेगा जैसे, तो वैसे ही उसको मेल आपका दिख जाएगा. ओके, सो ये सारा काम इनसाइड का है. इट्स अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. ओके, it's a conceptual framework which tells you everything how your packet is traveling from your source to that destination. Okay, तो ये पूरी एक जर्नी आप इमेजिन कर सकते हो. whenever you are thinking of the OSI reference model, so you need to think this diagram. Okay, ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लूँगे, then you will come to know कि हाँ. Okay, whenever now onwards, आप में से काफ़ी लोग तो करते भी होंगे because most of you have an idea about this journey and having an idea of the OSI reference model also. That's very good. But still, now onwards, when you think of any file you are sending to your friend, okay, you are sending some data, for example, from WhatsApp. Okay, from WhatsApp you are sending one file or one video to your friend. Okay, एक friend को, दो friend को या broadcast किया आपने, जो भी. So whenever you are sending any file or any data to your friend or to multiple friends, then what will happen? Then you will imagine कि हाँ अब ऐसा हुआ रहेगा. अब आपका फोन है, it does not mean that कि आपका जो device A है ये कंप्यूटर ही होना चाहिए. It does not mean so. Okay, so maybe that device is maybe your mobile phone. Okay, you are sending mail, you are sending data, you are sending your multimedia data from your mobile phone also. So it doesn't mean. So whenever now onwards, whenever you are sending or forwarding any data or packet or any data to your friend or to any of the recipient, then you will imagine this situation. Okay, you will imagine this diagram and you will understand कि हाँ अब मेरा जो पैकेट मेरा डेटा है यहाँ पे अभी पार्ट बाय पार्ट हुआ रहेगा, फिर आगे इसको फ्रेमिंग हुई रहेगी, उसमें फिर एड्रेस लगे होंगे, उसमें अभी IP एड्रेस लगा, उसके अंदर अभी मैक एड्रेस लगा, फिर आगे फिर वो रॉबिट्स में कन्वर्ट होके फिर वो फिजिकल लेयर ने भेज दिया. आई वॉज यूजिंग वाईफाई कनेक्शन, तो वो वाईफाई के थ्रू हवा में उड़ के गए, वो जा रहा है वो जा रहा है आपका पहुंच गया रिसीवर के पास में, ये आपका रिसीवर आ गया रिसीवर के पास में. रिसीवर के पास में यही सारे जितना आप लोग देख रहे हैं तो सारा प्रोसीजर हुआ. यहाँ से आपका डेटा गया आपका नीचे, सबसे नीचे फिजिकल लेयर. आफ्टर दैट डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ओपन, आपका मल्टीमीडिया आपको पहुंच गया. ओके, सो इन दिस वे यू कैन इमेजिन दिस OSI रेफरेंस मॉडल हाउ इट इज यूज्ड. ओके,
So this is just with the help of example I have tried you people that you can you just try to understand the working of this OSI reference model. Now we are having layer by layer explanation of each and every layer. Okay, मैं ये टॉपिक को एकदम डीप में लेके जाता हूँ सो दैट आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़े इसके फंक्शनैलिटीज याद रहे, इसका एक एक डायग्राम आपको याद रहे. Literally if this question is asked for the 10 marks then you need to write and draw a lot of things. Okay, remember if this question has been asked for in examination for 10 marks then आपको इसमें बहुत कुछ लिखना भी है, बहुत कुछ ड्रॉ भी करना है. ओके हाँ 54 आ गए, चलो ठीक है सब लोग आ गए. ओके सो यहाँ तक हमने सिर्फ इसका डायग्राम देखा है. नाउ वी विल see layer by layer explanation. Okay, so as you can see these are the 7 layers of OSI. Okay, see this is the sender side. On the left hand side you will find this is the transmission of data is being done and which is passing through all the layers, and it is then transferring to the destination computer or destination machine via some transmission media. Okay, maybe any physical link or maybe wireless. Okay, so that data has been reaches to the destination, that is to the receiver. Then again at the receiver side your data will passes through all these 7 layers and will receive the data. Okay, so you can just imagine the situation, आपका यहाँ से आ रहा है और फिर ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जाके फिर आपको डेटा रिसीव होगा. ओके so this again one more diagram, but this diagram is not better than this one diagram. कौन सा diagram है? हाँ ये वाला diagram. Okay, so this diagram is the main diagram. Okay, which tells everything, which tells the interfaces between these two layers also. Okay, how the interfaces में आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं. This is the 7-6 layer interface. Okay, obviously आपका 6 layer है, this is the 7th layer. So this is the interface between the 7 and 6 layer. And likewise फिर आपका physical communication है and all that. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके सो हु डेवलप दी OSI. मैंने कुछ एक स्लाइड इसके अंदर ऐड किया हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस. दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इवन here also I have not written the actual what we say full form of this ISO. We used to इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ओके बट हमारे एक सर थे, उन्होंने हमको कहा था he taught us the networking. सो उन्होंने हमको बताया कि बेसिकली जहाँ पर हम लोग मीटिंग वगैरह में जाते हैं, so those people used to say this is not the international standard organization. Our Indian people always used to say international standard organization. So it is not like that. It is the international organization. Basically it's a international organization for standardization. Okay, so basically it is the international organization who standardize the things. Okay, जो कि आपके मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं, जो मॉडल होते हैं, तो उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपका मतलब कि ISO है. ओके सो ISO ने हमारे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल को डेवलप किया. ठीक, जस्ट हमको इतना याद रखना है कि हमारा जो OSI रेफरेंस मॉडल है विच इज़ द कंसेप्चुअल मॉडल, कंसेप्चुअल नेटवर्किंग मॉडल, it was developed by ISO, that is International Organization for Standardization. आप ये भी लिखो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ. So it divides network communication into 7 network. This is the data. Okay, you can use this is the data you can use for the writing purpose. Okay, आप थोड़ा theory भरने के लिए you can use these slides. Okay, it divides the network communication into 7 layers. Please do not throw sources. These are away. Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Okay. Layers 1 to 4 are considered the lower layers. Okay. Sometimes this question is asked by the examiner in Viva exam कि भाई इसमें lower layers कौन सी है और higher layers कौन सी है, upper layer कौन सी है, sorry. तो lower and upper layers कौन कौन सी है आपको बताना है. तो first 4 layers है 1, 2, 3, 4. Physical, data link, network and transport. These 4 layers are referred as lower layers. And mostly इनका जो कंसर्न होता है ये डेटा को मूव करने के लिए होता है बेसिकली. और जो 5 to 7 होती है 5, 6, 7 दैट इज सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन. ये डेटा ये आपका एप्लीकेशन लेवल डेटा, यानी कि बेसिकली आपके डेटा को मेंटेन करना है. सेशन लेयर क्या करता है, आपके जो सेशन को मेंटेन करेगा, जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है वगैरह,
उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर आपके डेटा के फॉर्मेटिंग पे ध्यान देगा कि आपका डेटा अगर MP3 है तो MP3, अगर आपका ऑडियो डेटा है तो MP3 में होना चाहिए या फिर .ac फॉर्मेट में होना चाहिए एंड ऑल दैट। अगर आपका वीडियो है तो MP4 में होना चाहिए, AVI में होना चाहिए। तो इट वर्क्स ऑन it works on the presentation part and then application basically आपके application level protocols है। So basically it is connected with customer। तो बेसिकली डेटा के प्रेजेंटेशन के लिए अपर लेयर्स है 5 6 7, जो लोअर लेयर्स है 1 2 3 4 डेटा को मूव करने के लिए ये ज़्यादा कंसर्न होता है। ओके, सो लोअर layers and upper layers, okay, remember this thing. And your in your network operates on the basic principle that is pass it on. Okay, then if you will find this reference model, then हम लोग ने देखा आपका अगर कभी, चलो ऊपर जाते हैं वापस से, आपके डिवाइस ए, यू कैन सी द डिवाइस ए, तो आपका जो डेटा है विच इज कमिंग, विच इज एट द सेंडर साइड। ओके, सो एट द सेंडर साइड योर डेटा इज कमिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, डेटा को पास किया, pass it on. So it works on the basic principle, pass it on. So application layer से pass it on, okay, presentation layer, then pass it on, pass it on, pass it on, pass. Basically pass होके आया है आपका डेटा, फिर वो रिसीवर पे पहुंचेगा, रिसीवर से नीचे से पास होते होते आपके डेस्टिनेशन आपके कंप्यूटर को मिलेंगे। So basically it works on the principle that is pass it on. Each and every layer perform its इसके हिस्से का काम करता है। हर लेयर अपने हिस्से का काम करेगा और पास करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आया पास कर दिया। सो बेसिकली इट रिसीव द डेटा, इट वर्क्स ऑन इट एंड देन इट पास इट ऑन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक्चुअली ये किया हूँ कि लेयर वाइज मैंने इसका एक्सप्लेनेशन रखा। ओके, इवन वी विल टेक सम टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट, बट स्टिल अगर एक बार ये अच्छे से होता है देन यू विल एटलीस्ट यू विल रिमेंबर फ्यू थिंग्स। ओके, और ये एक एक चीज़ आपको आगे चल के आने वाली है। जैसे कि फिजिकल लेयर तो नहीं है, आपका चैप्टर है, बट जो डेटा लिंक लेयर आगे चल के आपका चैप्टर है, आपका नेटवर्क लेयर भी चैप्टर है, देन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर भी है कहीं तो, और फिर एप्लीकेशन लेयर लास्ट वाला है। सो मतलब बेसिकली आपके ये चैप्टर्स बनने वाले हैं। सो बट एंड इन द स्टार्टिंग ओनली वी विल गेट सम आइडिया अबाउट दिस लेयर्स। ओके ओके, थोड़ा सा रुकते हैं, एकदम भागना भी अच्छी बात नहीं है। सो यहाँ तक हम लोगों ने जस्ट OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, and at least at this level, at this point of time, at least we can say and we can tell anyone that what is the OSI reference model and why it is used and what are the different layers and what are those layers are called। okay, basically तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। सो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी लोग बेचारे खामोश बैठे हैं। Khan Osama left the meeting, why so? 54-55. Okay, I'll ask some question but I can understand if you are listening. Farheen Master, please unmute yourself. Okay, network issue वापस Yes, join sir. होगा। Yes, Farheen. Okay, so whatever we Yes, have learned sir. till now, that is regarding OSI reference model, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, सो क्या मुझे आप उनके नाम बता सकते हैं प्लीज? कैन यू नेम ऑल द लेयर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप? Okay, physical layer, data link, network, transport, session, presentation, application. ओके, थैंक यू सो मच। That ओके, एनीवन? हसन कहाँ पर है हसन? हसन शेख लेफ्ट द मीटिंग। अरे वाह, ये भी अजीब है। हसन शेख को मैंने पूछा और हसन शेख ने मीटिंग लेफ्ट किया। हसन शेख वापस आ जाओ। ओके, यू विल गेट इन अटेंडेंस। ओके, फॉर दैट अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हो तो। और देखते हैं इनायत, सैयद इनायत। Yes, sir. Okay, very good for responding. Whatever we have learned till now, so समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. Okay, so can you brief me about the OSI reference model? Sir means exactly what you want In to short, say. huh? Yeah, okay. OSI is developed by
International Organization Standard. Okay. Yes, sir. Hello. Yes, yes, I'm listening. Please proceed. Yes, sir. What else you want? Yeah, you have just tell me about who is the this OSI is developed by whom, but now how it works basically. I need more explanation about this OSI reference model. Oh, Shifa, Shifa, Yes, sir. yes, Shifa. Can you brief me about this OSI reference model? Yes, Shifa. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So, can you brief me about this OSI reference model? Open System Interconnection Reference Model. What is it, and why we are using this OSI reference model? I'm sorry, can you please repeat yourself? Your voice is a little distorted. Okay, my voice is little bit distorted. I think people are Yes, listening can you? me when I was telling you people's. No, Am no, I no. audible I just now? read. Yes. I just rejoined right now because I was cut off from the meeting. I don't know who did it, but I was cut off from the meeting by someone, and then I had to rejoin it. But then Okay, okay, after that, okay. Not my an issue, Wi-Fi was Shubha. working properly. Okay, not an issue. But still, just stay focused. Okay. Yes, sir. Shruti, Shruti. Yes, sir. Okay, you are listening now. Yes, I'm listening. Can you Yes, brief me yes. about the OSI reference model? Yes, OSI reference model has 7 layers in it. Okay. The physical, data link, network, transportation, session, presentation, and application. Okay. Very good. When a user sends the data, the first layer is the application layer. Then it is passed on to the presentation layer, then session layer, and likewise it comes to the physical layer. From the physical I layer, think I it think is I think connected you are in to the reverse order, Shruti. I think you are in the reverse order. If the sender is sending some most. data, if the sender is sending some data, then the data will comes to the application layer first. Ah, Okay, it will not go to the physical layer. Okay. yes, sir. Actually, I want to say that send, I told receiver. Okay, okay. Sorry. Remember, there is some confusion like this one. In at the sender side, you can see my slide. So at the sender side, the things will move from the application layer to the physical Layer to layer. the physical And layer. at Yes. the receiver side, your data will move from physical To layer to the the application layer. Okay? application layer. So this is you need to And remember. Yes, again proceed. and the layers from 1 to 4 are considered as a lower layer because they move the datas, and Okay. the 5 to 7 are considered as the upper layers that it contains the application level data, and Okay. it works on the basic principle of pass it on. Okay. Thank you so much. You are welcome, sir. So I hope that you have understood the concept behind this OSI reference model. ज़्यादा तो हम लोग ने आज कुछ किया नहीं, but still we have started with the OSI reference model. Okay, so I will share this slide with you people on the Google Classroom. Then you can at least you can go through the content whatever is there and whatever we have learned today. Okay, so at least we can for today's session we can at least cover one more layer, the very first layer we can cover. Okay, because it is 41 in 4 minutes, at least we can cover one more. Okay, and after that we'll take the attendance. Okay, so moving on the first layer, that is the physical layer. It is a very you know basic function is being done by the your physical layer. Okay, so we have the first layer. As you can see, we have first layer, that is physical layer, and this physical layer is and this physical layer is the first layer. So let us start with it.
So this is the first layer of OSI reference model. You can see the slide. First layer of the OSI reference model. Okay, I told you that the physical layer is considered as the first layer. Even if you will see from top to bottom, so this is the last layer. But in the reference model perception, this is the first layer. Okay, so first layer of OSI reference model, it converts the data into bits. So whatever data it will receive from the application layer at the sender side, it will convert the data into raw bits. Okay, आप देख सकते हैं उसको रॉ बिट्स में, इसको 010101 के फॉर्म में जो कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे फिजिकल लेयर की है. ओके, सो हमारा फिजिकल लेयर डेटा को जो कि उसको अपर लेयर से मिलेगा, इट विल कन्वर्ट दैट डेटा इनटू रॉ बिट्स. ओके, और रॉ बिट्स में कन्वर्ट करके कहाँ रखेगा? इट विल पुट दैट पर्टिकुलर रॉ बिट्स ऑन टू द ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि आपका चाहे तो वायरलेस है, सॉरी, चाहे आपका वायरलेस है चाहे वायर्ड है. ओके, सो वट एवर ट्रांसमिशन मीडिया यू आर यूजिंग फॉर द ट्रांसमिशन पर्पस, सो वो क्या करेगा फिजिकल लेयर? दैट फिजिकल लेयर विल पुट दैट रॉ बिट्स ऑन टू योर ट्रांसमिशन मीडिया. रखेगा मतलब कि वो उसको ईज प्रोवाइड करेगा कि वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया उसको कैरी करके आगे लेकर जाए, जहाँ पर भी जाना है उसको रिसीवर साइड में. So it will deliver, or it will transfer that particular data, or that is raw bits from that machine to the destination machine. Okay, data transfer from one machine to another by the medium. Okay, as you know that this physical layer is very much connected with the transmission media. As you can see the diagram, this is the physical layer. Okay, and this your physical communication is directly connected with the physical layer. Okay, so basically we can see this statement that your data transferred from one machine to another machine is by the medium. Okay, so यहाँ पर आपका physical layer काम करेगा जो कि आपके transmission media को properly ease provide करेगा, so that your data will be carried from the source machine to the destination machine. Okay, it also establish the communication because यहाँ का जो establishing का मतलब establishing में बोलेंगे, जो connection का जो सवाल है ये आपका physical layer से connected है, because your physical layer is the one who is connected with your transmission media. So basically it establish the communication. हालांकि ये इसको हम लोग ज़्यादा logically नहीं लगता है, but still we can write. Then few functions are being given, that is it defines the data rate. आपका जो data है, again look at the diagram. This is your physical layer. Okay, this is your physical layer. So from how much data rate your data will be transferred from one machine to another machine. Okay, so data rate क्या होना चाहिए? That will also be defined by the physical layer, because physical layer is directly connected with the transmission media. Okay, so remember this thing. So define data rate. आपके data rate क्या होना चाहिए? आप कितना 2 KB, 4 KB, 5 KB, 10 KB, 50 KB per second, per minute, कितना आपको भेजना है? Whatever data rate you want to define, that you can define, and it is being defined by the physical layer. आगे synchronization. Okay, that synchronization is also very important because it basically requires for the communication establishment. Okay, so synchronization is basically for most of you know, आपको मालूम है synchronization का meaning क्या होता है, but still I will say in our network terminology, I will say that this is the basically understanding. Okay, understanding between the sender and the receiver. Okay, so understanding between the sender and receiver करने के लिए आपका physical layer है. Okay, signals into bits and vice versa. At the source side or at the sender machine, your data will be converted into raw bits. Okay, and again at the receiver side, your raw bits will be converted into the data. Okay, want to see the diagram? At the physical layer, at the sender side, your data will be converted into the raw bits, and then it will put onto the transmission media. Your transmission media, maybe it is a wired media or it is a wireless media. The data is being carried by communication media, that is transmission media, and when the data will reaches to the destination, that is to the receiver or the receiver machine, then then the data will be accepted by the physical layer. Your physical layer will receive that raw bits
and again it will convert it into the data. Okay, so raw bits को data में, data को raw bits में convert करने का काम आपके physical layer का है। और जो मैंने रेड पोर्शन में जो मैंने लाइन लिखा हूँ, फॉर ईच एंड एवरी लेयर आई हैव रिटन इन दिस वे, सो दैट इज द टैग लाइन। ओके, फॉर ईच एंड एवरी लेयर द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स, ओके, फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप। ओके, फ्रॉम वन होप मीन्स वन मशीन, ओके, या वन टर्मिनल, ओके, या वन नेटवर्किंग डिवाइस। तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक के लिए आपका फिजिकल लेयर क्या करेगा, एक एक बिट को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप, दैट इज फ्रॉम नोड टू द नेक्स्ट नोड। ओके, उसके बाद का जो भी है, फिर वहां से लेकर फिर नेक्स्ट नोड के लिए अगेन रिस्पॉन्सिबल, फिर बाद में उसके आगे से लेकर फिर उसके आगे जाने के लिए अगेन रिस्पॉन्सिबल। ओके, और ऐसे करते करते वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ओके, so this is the very short introduction about the physical layer. उसके कुछ functions भी है that you need to remember. It defined the data rate, synchronization between both the machines, and then it will convert the signals into bits, that is raw bits, or raw bits into the signal, that is vice versa. Okay, you can see the diagram. The last one, I'm finished now. So as you can see the diagram for each and every layer, you need to draw this diagram for each and every. When you are writing an answer for this question, that is for the 10 marks question, then you need to draw this diagram for each and every layer. Okay, so when you're drawing for the first, that is the physical layer, then you need to draw this diagram. Like your physical layer is getting some data from the data link layer. Okay, और उसको देखो वो प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करके उसको उसने 0101 फॉर्म में कन्वर्ट किया है, and that 0101 data is being put on the transmission media. Maybe it's the guided transmission media, मतलब या तो wired है या तो wireless है, we are not dealing with it, but वो transmission media होना चाहिए। ओके, उसके थ्रू आपका 010101 जा रहा है। अब 0101 जा रहा है, अब ये पहुंचेगा कहाँ पर, ये आपके रिसीवर साइड पे पहुंचेगा। When the receiver will receive this data, again it will convert that particular raw bits into the data, और आगे कहाँ forward करेगा, to the data link. Okay, so this is all about the first layer. We have covered only first layer. In the next section, that is tomorrow, we'll cover remaining one. Okay, thank you so much. 10:49 हो गए. I will put the attendance